अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डैंड्रफ, हेयर फॉल, ऑयली स्कैल्प और ड्राई हेयर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, you may be wrong because in most cases these are not separate problems. These are actually different signs of one single issue. That is excess scalp oil production. और ज़्यादातर लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को अलग अलग ट्रीट करते हैं. That's why they fail to fix any of them. And I know that because I've been through this exact phase. There was a time when I was dealing with dandruff, hair fall and oiliness all at the same time, and I was constantly failing to fix any of it. Mainly because I was trying to treat them separately instead of treating the root cause. Because everyone on the internet was too busy suggesting different products for dandruff, hair fall and oiliness. इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ 5 different products suggest करने नहीं आया हूँ. I'm here to show you how excess oil production is the only issue that is causing all of this, and how to fix it in the simplest way possible. Because an oily scalp doesn't just make your head look greasy. It creates buildup, which then feeds the dandruff causing fungus, which leads to irritation around the roots. And once the roots get irritated, hair fall starts increasing. But it gets even worse. Instead of moving through the length, ये oil तुम्हारे head पर ही stuck रह जाता है, which makes your roots feel greasy while your hair ends are dry. It's the same problem with 2 completely different outcomes. So I'll show you how this entire chain of issues actually work, why the most common solutions fail to show any results, and how to actually balance this oil production, because trying to remove it will only make it worse. And by the way, अगर तुम्हारा scalp constantly oily है, no hair growth products will work properly on top of it. So let's see how oily scalp actually creates all the rest of the issues. ऑयली स्कैल्प होना खुद में प्रॉब्लम नहीं है. स्कैल्प नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करता है खुद को और तुम्हारे बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये ऑयल एक्सेस में प्रोड्यूस हो, क्योंकि यहीं से बाकी सारी दिक्कतें शुरू होती हैं. एंड while most people are trying to treat their dandruff, hair fall, oiliness and dryness as separate problems, you need to understand कि ये सारी ही प्रॉब्लम्स एक चेन रिएक्शन है जो शुरू होती हैं एक्सेस स्कैल्प ऑयल प्रोडक्शन से. जब स्कैल्प एक्सेस में ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो तुम्हारे रूट्स को सिर्फ शाइन नहीं देता, वो स्कैल्प के ऊपर बिल्डअप क्रिएट करता है, और ये बिल्डअप ट्रिगर करता है डैंड्रफ को. एंड नाउ you've got dandruff because of oily scalp, but it gets even worse. जब डैंड्रफ और फंगस स्कैल्प के ऊपर ग्रो करते हैं तो वो इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं अराउंड द रूट्स, which causes unnecessary hair fall, क्योंकि irritated roots hair strands को properly hold नहीं कर पाते, and suddenly you've got hair loss because of oily scalp. And because you ain't got any other explanations for your sudden hair loss, you call it genetic. So now you understand how oily scalp creates 4 different problems: dandruff, hair fall, oiliness and dryness. But the more important thing to understand here is, if excess oil production is the only problem that you need to solve, then why do most common solutions fail to show any results? Well, here's why. Let's go. The most common solutions on the market not only fail to show any results, but in most cases make things worse. ज़्यादातर लोग ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ देखते ही या तो अपने वॉशेस बढ़ा देते हैं या फिर हैवी ऑयलिंग शुरू कर देते हैं, or they rely on hair growth treatments. And while they may give you some initial results, the dandruff just keeps coming back and the hair fall never improves. मैंने भी ये सब ट्राई किया हुआ है, इसीलिए जानता हूँ. शॉर्ट टर्म में कुछ डिफरेंस लगता है, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम वहीं रहती है या और बढ़ जाती है. And these problems happen because most of the people online advise you to completely get rid of this scalp oil, which is physically and biologically impossible. क्योंकि तुम इस ऑयल को सिर्फ कंट्रोल और बैलेंस कर सकते हो. अगर तुम इसे एग्रेसिवली हटाने की या ओवरलोड करने की कोशिश करोगे, things will get worse. जब तुम ओवर वॉशिंग करते हो तो तुम स्कैल्प का सारा नेचुरल ऑयल हटा देते हो और स्कैल्प रिएक्ट करके और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे प्रॉब्लम की साइकिल सिर्फ तेज ही होती है. But things get even worse when you try fixing everything by over oiling. जब तुम heavy oils यूज करते हो without fixing the scalp, तो तुम ऑलरेडी ऑयली एनवायरनमेंट को और ज़्यादा हैवी बना देते हो, जिससे कि बिल्डअप और फंगस और तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन टाइम हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. एंड देन यू ट्राई हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स दैट नेवर वर्क. ऐसी कंडीशन में हेयर ग्रोथ सीरम्स और ट्रीटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्कैल्प ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड है, एंड रूट्स रिस्पॉन्ड द बेस्ट when they are living in a healthy environment. And this, by the way, is the same reason why scalp massages give you hair fall instead of hair growth. So now it's clear that the reason most common solutions fail to show any results is not because the products are bad, but because either they simply don't target the root cause, or they can't work properly because the scalp is already irritated due to oil and buildup.
और अगर तुम्हें इस ऑयल इम्बैलेंस को प्रॉपरली फिक्स करना है तो तुम्हें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो कि इस ऑयल को बैलेंस और कंट्रोल करे इंस्टेड ऑफ एग्रेसिवली अटैकिंग इट, एंड हियर इज द सिस्टम दैट यू नीड टू फॉलो. I wanna be the The simple system to fix your oil imbalance does not require you to purchase or use multiple products because your end goal here is only to achieve these 4 things: clean scalp, controlled washing, oil distribution and maintaining balance over time. और ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं. वो ऑयल को या तो कम्प्लीटली रिमूव करने की कोशिश करते हैं या उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं क्योंकि हमारा गोल ऑयल को हटाना नहीं, उसे बैलेंस करना है. And this slight change in thinking brought a turning point for me. जब मैंने अपने स्कैल्प ऑयल को एनिमी की तरह देखना बंद कर दिया, everything else became so much easier to manage. Because instead of trying to remove it completely, I focused on balancing and distributing it properly. And here's the system that I followed. ये सिस्टम 4 सिंपल चीज़ों पर बेस्ड है: clean scalp, controlled washing, oil distribution and maintaining balance over time. And clean scalp is by far the most important thing. क्योंकि अगर तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर ऑलरेडी बिल्डअप होगा तो कोई भी रूटीन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने स्कैल्प को रेगुलरली क्लीन रखो विदाउट ओवरडूइंग इट. एंड अ माइल्ड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू विल हेल्प यू द बेस्ट हेयर. बट इवन विद अ माइल्ड शैम्पू यू स्टिल नीड टू कंट्रोल योर वॉशेस. और कंट्रोल से मेरा मतलब कम वॉशेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वॉशिंग कम करने से ऑयल एक्यूमुलेट होता है और ज़्यादा करने से ऑयल ओवर प्रोड्यूस होता है. तो तुम्हें एक बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होगी, which I think twice a week is good enough, but it can be different for individuals. So try to find what works the best for you, and once you do, the next most important thing is proper oil distribution. Scalp oil की one of the biggest problems ये नहीं है कि वो प्रोड्यूस या ओवर प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो accumulate होता है instead of moving through the hair length, because this accumulation of oil is what causes the real problems. तो इस ऑयल को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो यूजिंग अ वुडन कूम, तुम्हारे बाल चाहे लंबे हों या छोटे. एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज मेंटेन द बैलेंस. स्कैल्प को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस इट्स डन, just include a scalp massager in your routine to regularly break down the buildup, and just keep doing what got you here in the first place. So in order to control and balance your oil production, all you need is a clean scalp, controlled washes, proper distribution and maintenance. So understand, तुम्हें 4 अलग problems नहीं हैं. You are just seeing one problem in a lot of different ways. Dandruff अलग नहीं है, hair fall अलग नहीं है, oily scalp or dry ends opposite problems नहीं हैं. They're all connected, and it all starts from an oil imbalance over the scalp. Just fix your excess oil production with the system that I just gave you, and everything else will be fixed automatically. Stop chasing 5 different solutions for 5 different problems. Just fix your scalp and your hair will fix itself. And always remember, I love you.